solid state material, Department of Physics, IIT Delhi in 2001. Thereafter completed PhD from Center for Energy Studies, IIT Delhi in 2007. In 2016, he joined CSIR Central Electronic Engineering Research Institute, Sherry Pilani, as a scientist. Since 2020, he is working as a senior scientist in Semiconductor Process Technology Group at CSIR Sherry Pilani. His research interests are flexible electronics, plasmonics for biomedical detection, and light trapping photovoltaic solar cell. So I'm welcoming you, sir. Am I audible? Eshwar, sir. Dr. Eshwar, can you hear me? Oh. मैं जो है सबको एक्सटेंड कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें तो सब पार्ट है हो जाएंगी। यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं क्योंकि हफ्तों में नेट पे लोग बाकी यस सर। Hello, Dr. Hello. Yes, you are audible. Okay, okay. So are we going to start or should I start the presentation? Yeah, you can start. Okay, okay. Hello, good afternoon all. Let me share my presentation.
So is my presentation is visible? Dr. Yes, Singh? sir. Yes, sir. Okay. So shall I continue? Shall I start my presentation? Yes, sir. Okay, thank you. Hi, once again, good afternoon all. So myself, Eshwar, I am associate with this semiconductor process technology group at CSR Siri Pilani. So I'm happy to be part of this interesting event that is on physics on Friday from this Deen Dayal Upadhyay Gorakhpur University. This is very special, physics on Friday. So today I'm going to talk about flexible tactile sensors. So from the title itself, you might have got an idea that I'm going to talk about flexible electronics. So what are these flexible electronics? How these are useful? How these are different from regular electronics? I'm going to discuss. So first of all, yes, this tactile sensor. Yes, I'm going to talk about a tactile sensor. And sensor can be of various types. It can be a gas sensor, it can be a temperature sensor or humidity sensor, various type of sensors. But this tactile, I don't know whether you are aware of this word or not. Tactile is something related to touch. Human tactile system, that is nothing but our skin, tactile skin. Tactile system is our skin. So flexible touch sensor. Also we can name it as flexible tactile sensor or flexible touch sensor or pressure sensor. Before going into details, let me briefly introduce where I belong to. As Dr. Sintu Kumar asked, so where are you all these days? So I'm here at CSR Central Electronics Engineering Research Institute, Pilani, which is at here in Rajasthan. So this is our beautiful institution. Yes. So CSR series is one of the 37 labs of CSR, so which are spread all over the country at different places like here. So here in Rajasthan, we are the only laboratory dedicated to electronics research. So briefly discuss about what our focuses are. So we mostly work on three major core theme areas: semiconductor devices, one area related to semiconductor devices, which is further again bifurcated into process technology group and microsensors and microsystems groups. And we also work on vacuum electronic devices. Also, we work on advanced electronics like AI, machine learning, and some integrated circuit and systems. So we not only work on sensors, just on sensors, but sensor systems, sensors and with interface electronics. We work on sensor systems. So anybody who is interested to work in these areas may contact us for pursuing their R&D activities in our institutions. These are the outlines of my presentation. Yes, sir. Adam. Yeah, briefly I will talk about human tactile system, and from there we got this inspiration and various type of mechanoreceptors. And I will talk about static and dynamic. What are the static and dynamic pressure sensing techniques? And there are different roles of microstructures in flexible capacitor as well as other sensors. I will discuss about that part, and I will discuss about microstructuring of active material. And finally, I will discuss about flexible capacitive pressure sensor with micropyramidal and as well as microdome-like structured dielectric layers. Also, I discuss about some applications of these sensors. Sir, Yes, please. sir, can you please use a microphone because the student sitting in the classroom have not sense your voice clearly. Pardon, my voice is clear or what? Sir, your voice is clear. Online it is clear, but the people sitting in the classroom Okay, are not it is not clear. cannot hear Okay. it. Let me use my microphone. It will take 1 minute. Okay. Okay, sir.
Am I audible right now? Yes, sir. So is my voice is clear right now? Right now I'm using microphone. Yes, sir. It is. Okay, thank you. So yeah, so whenever we go for some explorations, there is always the interesting points comes from natural systems, being it a living entity or from the nature. So like here, we got this inspiration from this human tactile system. So what is human tactile system? As we know, so we daily interact with different objects, different environment, different ambient. Like we touch something, we handle something, we we lift something, and we exposed to sun something, like cold environment, hot environment, something. So we daily in daily life we interact with so many things. Like, so the interface is like our skin. So skin is the largest organ of our body, which not only protects our organs, internal organs, from the outer environment, different pathogens, dust, environment, and all. Not only it protects, but also it has different functions. For example, it senses different stimulations. Like it has mechanical stimulation, thermos. Let me, yes, yes. So our skin has different mechanoreceptors. For example, here, this is the cross section of our skin. It has two parts. The outer layer is called epidermis, and the internal layer is called dermis, which is having a large corrugated interface, something like this. So this structure has various receptors which are located at different interfaces. So briefly talking about, I will discuss about these things: mechanoreceptors, thermoreceptors, and nociceptors. What are these mechanoreceptors? Mechanoreceptors are responsible for transducing mechanical stimulus. For example, we are touching something. How we can feel something? Something is smooth or something is rough. We can feel using these mechanoreceptors. The thermoreceptors are responsible for feeling something is cold or something is hot. And the nociceptors are responsible for if you feel pain. So these receptors are responsible for the feeling of pain. So all these receptors are located at different interfaces to give wide range of information. If you're handling something delicate object, you can feel whether it is delicate or which is hard. Also, something is smooth or something is rough, you can feel. Something is cooler or something is hot, you can feel it. So this, using different receptors, you can feel, we can feel different environment. The interfacing is like the skin. Not only this skin has, this is the only property, but if you look into it, also synthesize like vitamin D. When we expose to sun, it also synthesis vitamin D, right? So it has different functions. But in order to mimic the properties of human tactile systems, we should understand how these different mechanoreceptor works first, and then based on that, what are the available techniques are there, and how we can mimic these functionality of the skin using different available transduction mechanisms. So here I'm going to talk about only mechanoreceptors. So the other things would take a much larger time. That's why I thought of discussing only mechanoreceptors. So further, these mechanoreceptors can be classified into further different cells, like here, Meissner corpuscle, Pacinian, Merkel cell, Ruffini endings, hair and nerve fibers, free nerve endings, and all this. So these mechanoreceptors are located at different interfaces. Like some mechanoreceptors are located at the interface of epidermis and dermis here. On the other hand, the other receptors are located like Pacinian corpuscle deep into the dermis. So the role is different. How their role is different, let us see. Further, these mechanoreceptor further can be classified into fast adapting type 1,
fast adapting type 2, slow adapting type 1, and slow adapting type 2. So what are these fast and slow adapting? Let us discuss. So here is a simple concept of how our skin generate action potential. So here I'm showing a just this is the schematic, which is like what I have shown you previously in previous slide, or simply the different mechanoreceptors are located at different locations of this dermis and epidermis and dermis. Okay, so here is the simple a temperature cycle is given to, let us say, thermoreceptor. What is this cycle? Our body temperature is like normally maintained at around 37 degrees Celsius. If we talk about in terms of Celsius, around 37 degrees Celsius. So here is a cycle with, on x-axis here we have time, on y-axis we have temperature. So initially the temperature is like 35 degrees Celsius, but after some time now this is decreased to 31 degrees Celsius, and again after some time it is reached to 35 degrees. This is a simple temperature cycle. For this, how our cell generates action potential, if we can see here. So now this is the cell potential. So there is cell potential in the form of voltage spikes, we can see here over time. For this 35 degrees Celsius up to here, we can see the cell potential is something like this. But when the temperature decreases to 31 degrees Celsius, what happened? Now the cell potential is increased. And when the cell temperature becomes normal, and then cell potential becomes normal. So this is how in our body different mechanoreceptors, they generate action potential in the form of voltage spikes. So this is how it generates. Not only this, for temperature stimulation, this cell potential, we can further look into, here is a mechanical stimulus. Now here is a stimulus over time, how this stimulus is varying, we can see here. Now here it is constant mechanical stimulus. Now it is gradually increasing, and now stabilized at this particular stimulus amplitude, and now it is decreased and it became normal. This is a typical mechanical stimulus. So for just for this mechanical stimulus, how different mechanoreceptors generate action potential. That's how we wanted to just to see how they can generate. For example, this SA1, as I said, these are slow adapting type 1, slow adapting type 2, and this fast adapting type 1 and fast adapting type 2. These receptors are located at different areas of this palm. We can see some are densely located and some are spacely located, and their density is, we can see here, from here for slow adapting, here for fast adapting type, here we can see. So for this stimulus, slow adapting type 1 generates action potential here. These red lines are action potentials with time. Now these action potentials are generated throughout this event, when the stimulus is gradually increasing, as well as when the stimulus is stabilized and when it is decreased drastically. In all the event, we can see that the slow adapting type 1 is generating action potentials. Similarly, slow adapting type 2, this also generates action potential throughout this event, throughout this mechanical stimulus. But when it comes to fast adapting type 1 or type 2, when there is a increase in stimulus, mechanical stimulus is nothing but, you are applying pressure. Let us say you are just pinching your skin, it means you are applying some pressure. That's it. You are applying some mechanical stimulus. That's it. Okay, it's nothing very different from that. So here, when there is a stimulus is gradually increasing, now fast adapting type 1 can generate action potential. But when there is a constant stimulus, when there is a peak and a constant stimulus, there is no action potential at all.
And when the action potential, when the stimulus decreases drastically, and then there is a action potential. Similarly, for fast adapting type 2 also, we can see here at the starting of the event there is a action potential, and at the end of this event there is action potential, but during this region there is no action potential at all. At the same time, at the end of the event also there are action potential. What I wanted to convey is, from this information, now here is we have a dynamic stimulus, and here we have a static stimulus. Static means with time the stimulus is constant over time, that's why we call it static. Okay, with time the stimulus is gradually increasing, that's why we call it dynamic stimulus. So these slow adapting type 1, type 2 and fast adapting type 1 can be further bifurcated into, these are whether suitable to dynamic stimulus or static stimulus. For example, SA1 and SA2, throughout the event we can see the action potential, meaning that these type of receptors they can generate both action potential for static, dynamic as well as static mechanical stimulus. But when it comes to fast adapting type 1 or type 2, they only respond to dynamic stimulus. Here the static stimulus is there, but the action potential is not there. Similarly, same thing here also. So it shows that slow adapting type 1 and type 2 are more suitable for static stimulus, and fast adapting type 1 and type 2 are more suitable for dynamic stimulus. So with this information we can understand that we can mimic some of the electronic transduction principle using transduction principles using different electronic devices. These functionality, whether we can generate sensors, we can develop sensor for static pressures or for dynamic, or it can be of multimodal type for static as well as dynamic. If you look into the literature, maybe if you are aware or not, so at least you might be aware of this, what are resistors, capacitors, right? As well as some piezoelectric, what is piezoelectric and triboelectric mechanisms. So if you look into the literature, resistive type and capacitive type transduction principles are more suitable for this static stimulus sensing. Similarly, piezoelectric or triboelectric mechanisms are more suitable for this dynamic sensing. So using these type of the sensor based on these resistive type, capacitive type, or piezoelectric or triboelectric type, based on using these mechanisms, we can develop sensor which can mimic the properties of our natural skin. So what is the importance of why we wanted to mimic this skin properties? If you look into the market, if you currently look into the market, there are different applications, like for example robotics is a vast growing field in the literature, but the currently developed robots, they don't have this kind of sensing. Like we can handle different delicate objects, like we can handle a delicate object like egg without breaking into, we can uh, we can touch a egg, we can keep it, we can hold it, and we can place somewhere without breaking the egg. But the same kind of functionality may not be possible with the conventional robotic hands. Why? Because they don't have this feedback information like this, like using our this sensor embedded at different locations of this our skin. We can feel it, we can feel whether something is some object is delicate or hard. We can feel it, and accordingly we can hold the pressure. We can hold whether some ball is hard or some ball is delicate. We can hold with different pressures. But
With robots, without having this feedback mechanism, what will happen? They can simply apply more pressure and they can crush the delicate objects. Some of the examples we can see in our coming slides. Not only that, like the electronic skin. So if we can develop, if we can mimic the properties of the skin for development of electronic skin, so that can be really gratefully help for prosthetic. A person with amputee, he can have the robotic hand with this tactile feedback, and at the same time he can feel different objects. If you see in the literature, in the literature or internet, you can find out that many people are developing robotic hands with this kind of feedback information. They can attach different sensors to the robot and they can feel different objects. So these are some of the applications of this electronic skin or this tactile sensor, where this tactile sensor can be useful. If you briefly look into this transduction mechanisms, how this transduction mechanisms works. So here I try to point out only 4: piezoresistive, capacitive, piezoelectric, and triboelectric. These are the mostly explored transduction mechanisms for R&D for various applications. The other mechanisms are also there, like optical, magnetic, or ionic, but which are not very much explored compared to these 4 techniques. So let me explain briefly how these 4 mechanisms work. Let us start with a piezoresistive mechanism. How a piezoresistive sensor look like? Here I have a electrode 1 here and electrode 2. Between these 2 electrodes, I have some medium, some elastomeric medium. Please be aware that whenever I'm talking about flexible tactile sensors, so these are completely different from conventional electronics. Like in your +2 or bachelor's or master's, you might have read that conventional semiconductor materials like silicon, germanium, gallium arsenide, gallium phosphide, and so on. There are variety of inorganic semiconductor materials are there. Also, the conventional sensors based on those materials are also there. Whatever we use today in the mobile phone or your PC or laptop or any electronic device we talk about, there are conventional devices based on silicon. But here I am going to talk about completely different from these conventional inorganic semiconductors. So here I am going to talk about polymer based materials. Between 2 electrodes, maybe of copper, here we have some elastomeric polymer medium is there, which is again insulating in nature. But in this polymeric medium, elastomeric medium, we have some conductive fillers here. Depending on the concentration of these conductive fillers, this can show, if we can measure the resistance between 2 electrodes, we can find some resistance, maybe in the of the order of kilo ohm, let us say, for example. But what will happen if there is no conductive fillers? Like here, these orange lines are like conductive medium. Okay, so in this, naturally, this elastomeric medium is like insulating in nature, which doesn't show any conductivity at all if there are no conductive fillers are there. But adding these conductive fillers, it will show some resistance, let us say of the order of kilo ohm. When we apply some pressure onto this top electrode, what will happen? Since this elastomeric, since the medium is elastomeric medium, like a rubber elastomeric, if you don't understand, just imagine a rubber. What will happen when you hold a rubber and try to press it? What will happen? It will compresses. Similarly, here also same thing will happen when we try to apply some pressure onto top electrode. So the elastomeric medium undergo compression and leading to the more compressed active material between these 2 electrodes, meaning that
When we compress it, the conductivity or resistance of this medium will decrease. More and more these conductive particles will come into contact with the electrodes and the resistance decreases. So compared to here with pressure, the resistance is decreased. So that's how this resistive mechanism works as a pressure sensitive pressure sensor. Similarly, the same analogy can be applied to all of these sensors, but slightly the mechanism is different based on whether it is capacitive, piezoelectric, or triboelectric. For example, between these two electrodes, here we have a elastomeric dielectric medium. Based on this thickness and area, initially it has some capacitance. Roughly, let us say, I'm just blindly taking just to give some numbers. Let us say 20 picofarad. It is showing initial capacitance of 20 picofarad. When we apply some pressure onto it, what will happen? The elastomeric medium will compresses, leading to the reduced separation between these two electrodes. Once the separation decreases, what will happen? The capacitance increases. So let us say if it is 20 picofarad, now it can go to 40 picofarad. So that's how this piezocapacitive sensor works for different mechanical pressures. Similarly, piezoelectric and triboelectric, there are certain type of class of materials are there, so which when a pressure is applied, when a mechanical stimulus is applied, then the polarization will start to appear based on this voltage charge appearance on these electrodes. There is a change in resistance, a change in voltage or current. Based on the change in voltage or current, it can work as a piezoelectric pressure sensor. Similarly, triboelectric, there are two different this is triboelectric sensors are slightly different from what we are having here. Instead of a continuous medium between two electrodes, like here it's a continuous medium, here the two different materials are separated by certain distance. When these are contacted, based on the contact electrification and separation, the charges are induced on both the electrodes, leading to change in again current or voltage. So based on this change in voltage or current, this triboelectric sensor works as a pressure sensor or tactile sensor. So let me briefly tell you why these two terms are different, like pressure sensor and tactile sensor, somewhat related and somewhat different. How they are similar? Like our skin, when we are having some skin, if you touch it, we call it as a tactile information. When you touch it something, we can see it as a tactile information. But when you apply large force, it is like a pressure, tactile and pressure, touch sensing or pressure sensing. Touch sensing is like you are not applying any pressure, slight touch is sufficient. But when you wanted to, like holding a hand and pressing it, you are applying some pressure onto it. So slightly different. So the advantage of these resistive, capacitive, piezoelectric and triboelectric sensors are, as we have seen, that these two sensors are more suitable for static pressures sensing, and these two mechanisms are more suitable for dynamic sensing. So that is the different role of these sensors. So in order to mimic the properties of skin, we can first of all develop individual sensors, and finally we can develop multimodal type sensors using combination of these mechanisms. So in further slides, I will just focus on this piezocapacitive type sensing. Before going into further details, I thought of briefly introduce the materials. Why? Because many people are acquainted with conventional inorganic semiconductor materials, something like this.
silicon, germanium. Whether if we go to any, if you look into your mobile phone or PC, the ICs, diodes, or other things are like made up of these silicon material. But these silicon material, these conventional materials are conventional semiconductors are rigid as well as brittle in nature. So if you wanted to develop some flexible devices, it is really difficult until unless you go to some very micron level. Then only you can develop these flexible devices using these materials. But if you go into this flexible materials, flexible electronics, there are different materials. For example, few things are shown here. Polydimethyl siloxane, PDMS, short form is like PDMS. This is an elastomeric polymer material. And then Ecoflex, polyvinylidene fluoride, polyurethane, PET, polyamide. These are some of the active as well as substrate materials widely used in flexible electronics. If you are really unaware of these materials, let me, I think almost all of you are aware of this material. What is this? Polyethylene terephthalate, PET, PET. I'm sure most of you are using plastic water bottles, right? So that plastic water bottles are made up of this PET, PET bottles. We call PET. What is this PET? It is a thermoplastic elastomer medium. Okay, and you are all aware that the PET bottles are quite flexible. When you try to press it, it compresses, right? It's a thermoplastic material. Similarly, the PDMS and Ecoflex, these materials are not thermoplastics, but they are elastic polymers. Elastic means like rubbery materials. When you try to stretch it, you can stretch it like a rubber. But this PET, it is quite flexible. PET is quite flexible, but when you try to stretch it, it is not possible. I think you can experience it when you hold your water bottle, and you can experience this not stretchability of this PET. Similarly, these are anyway active materials, but if you look into any active material does not form a device, right? It needs electrodes. So if you look into conventional electrodes, gold layer, silver, aluminum, copper, chromium, and nickel, these are the most commonly used materials, most commonly used electrode materials in this conventional electronics. But when it comes to flexible electronics, yes, we can also use some of these materials. Gold thin film of the order of 200 nanometer or 500 nanometer. In nanometer level, we can use these metals still in flexible electronics, as well as nanowires of these metals like gold nanowires, silver nanowires. So these nanowires are really flexible, stretchable, as well as carbon nanotubes, graphene, ITO coated PET, and P-dot PSS. These are all commonly used electrode materials in this flexible electronics. I thought of giving brief introduction to you about these materials. Why? Because most of you may not be aware of these materials. Let us focus on this capacitive pressure sensor, piezo capacitive pressure sensors. If you look into the conventional capacitors, if you just type a conventional capacitor in your old TV or radio or our normally used PCs, laptops, these kind of capacitors we can see in our electronic gadgets. But if we wanted to develop flexible sensors out of these materials, it is very difficult. So those flexible capacitive sensors are slightly different from what we see here. As I have discussed, for example, here we have two electrodes. Between two electrodes, we have here elastomeric medium. For a simple parallel plate capacitor, it is a simple parallel plate capacitor. The capacitance equations can be written as something like this, where these parameters are
permittivity of material, free space permittivity, area of the electrodes as well as the active medium, and D is the separation between two electrodes or the thickness of dielectric material. For this capacitive sensor, now the capacitance is proportional to relative permittivity and area of the electrode of the sensor, and inversely proportional to the D, the separation between two electrodes. For a given pressure sensor, the area remains same. We will not change area of the sensor. When a pressure is applied on top of it, what will happen? If this is elastomeric medium, the elastomer under pressure compress, this is the separation between two electrodes decreases. What will happen? The permittivity slightly changes and the separation between two electrodes decreases. What will happen if the separation D decreases? Capacitance increases. So this is how this capacitive pressure sensor works. But if you really look into the literature, what type of sensor people are looking into? Not like a sensor I have talked about in the previous slide, but with this kind of bulk medium, bulk elastomeric medium, what will happen? The applied pressure is converted into internal stress. It will not much undergo compression. If it is not undergo much compression, meaning that it is not much sensitive to applied pressure. That we don't want. So in order to improve its sensitivity as well as to have sensitivity for different applied pressure, so people have explored different microstructuring process. What are these microstructuring processes? Porous dielectric type. Between two electrodes, the medium is no more uniform medium. Now it is a porous. Porous, I think you are aware of what is porous, like a sponge. Sponge is a porous material, right? Something like that. There is a material and there are pores. These pores can be of air or any other high dielectric constant material. Maybe pores coated with some high dielectric constant material. Like that, if we, by doing so, this will readily undergo deformation easily compared to the bulk medium. Similarly, here are two electrodes. Between two electrodes, here we have a micro dome structure PDMS layer. Again here, between two electrodes, the microstructure region is there, but here the electrode is like flat, but here the electrode is also like microstructure. By doing so, the sensitivity greatly increases, that we can see in our next slide. Similarly, in some another concept, people have demonstrated using this tilted micro pillars, a capacitive pressure sensor of using an array of tilted micro pillars. So using this, they have increased sensitivity very largely. Similarly, here we have seen parallel plate capacitor, but there are other type of capacitors are also there. Interdigitated electronics, interdigitated type capacitive sensors. So here the advantage is, when we have this parallel plate capacitor, we have to take electrode from here, one electrode from here, and one electrode from here. But here, both the electrodes can be taken from a same substrate. That is the advantage. So these are some concepts how this microstructuring can be done to improve the sensitivity. Here I show you a simple example how this elastomeric material is made of. For example, here I have taken a PDMS material. PDMS is polydimethyl siloxane. When before the fabrication, this PDMS material is like viscous, highly viscous medium, like honey, right? Honey is a viscous material, right? Like honey, PDMS is also like a viscous medium.
It has two components, part A and part B. Before mixing of these two components, we don't get film like this. In order to get film like this, first of all, we have to take these PDMS part A and part B in some ratio. This is like here you can see the viscous medium, the base polymer and cross-linking agent. This is again a polymer, as I said. These are properly mixed with some ratio. Then spin coated on desired mold. For example, I wanted to have a flat PDMS film. Here I have taken silicon flat wafer over which I have coated this PDMS, and this spin coated medium is cured at 80 degrees Celsius for 1 hour. When we heat it, curing is nothing but heat treatment. Okay, like when we boil our egg, liquid becomes solidified right inside the egg. Similarly here also, when we cure this PDMS liquid, it becomes solidified. Once this is solidified, this can be detached from their respective mold. Now this is a flexible as well as stretchable PDMS film. Similarly, using the similar method, we can also develop different sensors. Now here is the simple capacitance characteristics of a pressure sensor. On x-axis, I have taken different pressures. On y-axis, there is a capacitance. Delta C by C naught is relative change in capacitance of this capacitive pressure sensor. When I have this, these are two gold electrodes. Between two gold electrodes, I have taken a PDMS elastomer film. This is uniform PDMS film. Now this is forming capacitive pressure sensor. When I apply different pressure onto it, also the two electrodes are connected to LCR meter for measurement of capacitance. That is very important. Otherwise, we don't get any signal out of it. Okay. For example, when I have connected these two terminals to LCR meter, and there is a zero applied pressure, the relative change in capacitance is almost like 0.2%. But when I apply different pressures like 300 Pascal, 600, and I slightly gradually increased up to almost like 2.4 kilopascal, the change in capacitance, relative change in capacitance is like almost like flat, meaning that this flat metal cannot be used as a sensor. Just to show how microstructuring is important, if I introduce microstructuring on one side of this elastomeric medium like this, here between two electrodes, now I have placed a microstructured PDMS film. How I have done microstructuring, I will explain in further slides. If you look into it, now the capacitance, base capacitance, when there is no pressure at all, like very less. But when I apply different pressures, see, the relative change in capacitance is gradually increasing from this point to, Sir, yes, so please can you conclude in 10 minutes? Hello. yes, please. Sir, can you conclude this PPT in 2 minutes because this will be the next lecture. Okay, in 10 minutes, no problem. Okay, I will conclude. So what I wanted to say is, by microstructuring that elastomeric medium, we can have the tunability, we can have the sensing for different applied pressures, and we can have the tunability. That's all I wanted to, sorry. Yes, so there are different type of microstructurings are there of this elastomeric medium, using photolithography, random regular micro patterns, or random micropyramids, microstructures, something like this. So various techniques are there. If somebody is interested, maybe they can contact me. So these are okay. Now, as I said, by introducing this microstructured medium between electrodes, now I can have the tunability. Here three type of microstructures are shown here. So just microstructures are shown here, but the medium is like micropyramidal structured PDMS layer. When there is a small separation between micropyramids,
you can see the characteristics here. When the separation is increased from here to here, see the relative change in capacitance is increased. You just compare this black data and red data. Now this is increased. Also the sensitivity. Initially it is 0.13, now it is 0.16 per kilopascal. One thing is relative capacitance is increased and the sensitivity. So by doing this different type of microstructures, the sensitivity of these sensors can be tunable. So how? Here the pressure sensor is attached in a simple PET sheet. PET sheet may be a folder plastic sheet. Okay. So when we have attached this sensor here, so here we can see completely transparent device. So these are IOPET based electrodes. That's why our entire device looks like transparent. When we apply here, you can see the pulse waveform of our arterial pulse. Here you can see. So using this sensor, it is possible to measure such minute pressures. Also, the disadvantage with this only microstructured sensors is like the adhesion is very poor. When we have sharp interface, then there is very little adhesion. When there is little adhesion, reproducibility of the sensors is very difficult. So in order to avoid, we have introduced kind of lamination layer here. Again, this is also of PDMS. By doing so, we have got very good adhesion, as well as we have achieved good adhesion, but when it comes to the relative capacitance, now it is decreased compared to this sensor. Now this sensor is underperformed, but here this sensor is more robust compared to this sensor in terms of repeatability. These sensors are like can measure minute changes, like this may be a 55 pascals. 55 pascal is very minute. This is a kidney be placed on the sensor. Here we can see initially like the relative capacitance is something like this, but when a kidney bean is placed onto it, now you see the capacitance is suddenly increased. When this is removed, and suddenly it comes to its normal position, shows that it is capable to measure small pressures. Here I wanted to show you something. It is not only about a single pixel, single sensor. Whenever we wanted to develop this electronic skin means what? If we have our palm, these small mechanoreceptors are distributed all over of our hand, right? Similarly, we wanted to have an array of sensors. For that, here you can see here this video, maybe you can see that we have developed this 4x4 electronic skin patch for single sensor. Here we can see using Arduino we could able to measure this single pixels like this. This is of IOPET based electrodes, but these IOPET electrodes are having some issues like PET, flexible but really not very flexible. So in order to avoid that issue, so we have come up with some other materials like the electrode as well as substrate as well as dielectric medium. All things are like PDMS only. Here these are the micropyramid. The dielectric is microstructure. Like here you can see the cross section of the device. There are different interfaces, but the electrode is like gold. Instead of IOPET, we have taken gold. Now the flexibility of the sensor, here you can see you can attach onto any surface conformably. This is a small electronic skin patch of 4x4, and you can see here the flexibility of this electronic skin patch. This is possibly using the PDMS substrates. If you go for PET, this level of flexibility is not possible. So similarly, this skin patch is successfully we have tested for single point sensing as well as for multi-point sensing. Here you can see for a single pixel,
And for this multi-point sensing, here you can see the response. So not only that, it has various applications. So simply this can be attached onto your wrist pulse. You can have your pulse data. Maybe in future devices may have this kind of sensors. Also, this kind of electronic spin, electronic patch can be attached onto variety of curved shapes, something like this. Here, this electronic skin patch is attached onto a balloon, and some mechanical kicks are induced from this side. So this is just, we wanted to mimic the properties of if a mother is pregnant with a baby, fetal kicks can be monitored using this kind of variable devices. Here for different kicks induced from here, so we have recorded the capacitance for different kicks. So for fetal health monitoring, or fetal means a child before birth is called fetus. So for fetus health monitoring, this kind of kick counter can be really helpful. Yeah, also the developed devices are quite stable up to 10,000. Even people have demonstrated for 1 lakh cycles. So these are some break test anyway. Just to yeah, I can just okay. Okay, not only sir, not only for a outside pulse wave monitoring outside pulse wave recording, but in some critical cases, sometimes in vivo after operation, so this sensors can be attached onto a artery, and data can be recorded using sensor antenna wirelessly. So this kind of applications also possible using this kind of flexible tactile sensors. Here I will show you. I have already said, for example, here is a robotic hand with tactile feedback and without tactile feedback. Here a small berry is there. For this robotic hands, if the tactile feedback is provided, how this behave, and if the feedback is not provided, how this behave, here we can see. With sensor, with this kind of tactile sensor, this robotic hand can easily go up to this berry, sorry, up to this berry, and it can see and it can detect the small berry, and without harming this berry, it can return back. On the other hand, when this disabled tactile feedback, I mean sensor feedback to this robotic hand is disabled, what will happen? So without knowing there is a delicate object, this can simply crush this fruit and simply comes back. So by comparing these two, it is possible that for a robotic hand, by providing such tactile feedback, so it is very much useful in future, that the delicate objects, or maybe for house helping or some other applications, these robots can be useful with this tactile feedback. So with this, I would like to thank you. If you have any questions, maybe I'm happy to answer you. Yes, please. Participant in the book, and if they have question in the one can ask. बात करने के लिए बैठे होंगे आगे आए तो जो भी लास्ट होंगे Hear you. Your voice is not clear. Sir, can you speak louder? Pardon? Sir, I'm saying this. Okay, if there are any questions, yes. Is there any question from the audience? please. Actually, we are facing sound technical issue. Okay. Parallel, we recorded your session. So those who have not listened your lecture properly, they will go to the recorded session. We will upload on the Physics on Friday website. So that's why we have a, I guess there are some participants from the online.
Is there any question from the participant who is attending the lecture online? Please ask. Participant in the Zoom can ask question. So I think there is no question. So, okay, if there are any no questions, thank you everyone. Thank you I'm so really much, sir. thankful. We have another lecture, so I'm thankful to you. Thank you, Singh Kumar. Thank you. So I'm inviting Sanskar. So, thank you for being here. Now we are moving to second lecture of this session. Today we have a very special speaker. He's a very good friend of mine, Mr. Atul Singh. He has done PhD from Allahabad University and MSc from GPU Gorakhpur University. Then he has qualified NET JRF and GATE examination. He is doing research in astrophysics. I think you know. His research area, I am little confused about his research area. Like, he is expert of some basics of astrophysics and astronomy. So he will talk about this, and also is expert for programming part. So with this, I will invite Mr. Atul to come here and. Thank you, sir, for the kind word. ओके गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू पीछे बैठे थोड़ा आगे आ जाए तो फिर बोल नहीं पाऊंगा मैं तो आज हम लोग बात करेंगे बेसिक ऑफ एस्ट्रोनॉमी के बारे में सबसे पहले कुछ फैक्ट्स और मिथ्स हैं जो हम लोग जानते हैं कि कुछ लोग सोचते हैं कि जो एस्ट्रोनॉमी करते हैं वो एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं लेकिन ये एक मिथ है एस्ट्रोनॉमर जो होते हैं वो नेचुरल साइंस को स्टडी करते हैं उनके स्टार्स को स्टडी करते हैं यूनिवर्स को स्टडी करते हैं उनके एटमॉस्फेयर को स्टडी करते हैं लेकिन जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो क्या करते हैं कि पोजीशंस देखते हैं मून के पोजीशन देखेंगे किसी प्लैनेट की पोजीशन को देखेंगे फिर उससे आपके भविष्य में क्या होने वाला ये प्रेडिक्ट करते हैं तो ये दोनों साइंस जो है ये एक दूसरे से विपरीत है दोनों बहुत अलग अलग साइंस है फिर हम क्या सोचते हैं कि जो एस्ट्रोनॉमर होते हैं वो एस्ट्रोनॉट होते हैं ये भी एक धारणा गलत है हम लोगों की जो एस्ट्रोनॉमर होते हैं वो साइंटिफिक रिसर्च करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज या यूनिवर्स के ऊपर और जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उनको स्पेस पे भेजा जाता है किसी एक पर्टिकुलर यूनिक मिशन के लिए भेजा जाता है उनको तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ एस्ट्रोनॉमी के सब फील्ड को एस्ट्रोनॉमी को हम डिवाइड कर सकते हैं बेसिकली दो पार्ट्स में एक ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी में और एक थ्योरेटिकल एस्ट्रोनॉमी में ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी में हम क्या करते हैं कि जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उसको रिकॉर्ड करते हैं हम लोग किसी टेलीस्कोप की मदद से या डिफरेंट रीजन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन में उसको हम रिकॉर्ड करते हैं और थ्योरेटिकल एस्ट्रोनॉमी में क्या होता है कि जैसे थ्योरेटिकल एस्ट्रोनॉमी में कोई मॉडल बनाया कोई तो उस मॉडल को एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जेक्ट से कोरिलेट करते हैं वो तो वो थ्योरेटिकल एस्ट्रोनॉमी में होता है अब थ्योरेटिकल एस्ट्रोनॉमी को डिफरेंट जैसे फिजिक्स के साथ कंबाइन करके केमिस्ट्री के साथ कंबाइन करके बायोलॉजी के साथ कंबाइन करके डिफरेंट फील्ड निकल के आती है जैसे एस्ट्रोफिजिक्स हो गई एस्ट्रोकेमिस्ट्री हो गई एस्ट्रोबायोलॉजी हो गई अब इसमें कई पार्ट्स होते हैं इसके जैसे हम लोग बात करेंगे एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में तो इसमें हो गया जैसे प्लैनेटरी एस्ट्रोनॉमी हम लोग तो प्लैनेटरी एस्ट्रोनॉमी में हम स्टडी करते हैं प्लैनेट्स को सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि मून एस्ट्रॉइड्स कॉमेट्स और उनके फॉर्मेशंस को स्टेलर एस्ट्रोनॉमी में हम बात करते हैं कि किसी स्टार कैसे वो इवॉल्व हुआ कैसे उसके साथ आगे क्या होने वाला है ये सब हम स्टडी करते हैं स्टेलर एस्ट्रोनॉमी में सोलर एस्ट्रोनॉमी एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम सिर्फ सन को
मध्य में रखे सन को स्टडी करते हैं, वो सारी स्टडी होती है सोलर एस्ट्रोनॉमी में। फिर आता है गैलेक्टिक और एक्स्ट्रा गैलेक्टिक एस्ट्रोनॉमी। गैलेक्टिक एस्ट्रोनॉमी मतलब गैलेक्टिक से ही समझ में आ रहा है हम लोग को कि ये गैलेक्सीज के बारे में। तो अगर हम गैलेक्टिक एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं तो इसका मतलब कि हम मिल्की वे गैलेक्सी की बात कर रहे हैं, और एक्स्ट्रा गैलेक्टिक एस्ट्रोनॉमी की बात कर रहे हैं तो मिल्की वे के बाहर की जो गैलेक्सीज है उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद एक फील्ड आती है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, इसके यूनिवर्स के बारे में स्टडी करते हैं कि यूनिवर्स कैसे, उत्पत्ति इसकी कैसे हुई, कैसे इसका अंत होगा, ये सारी स्टडी होती है कॉस्मोलॉजी के अंदर। अब जैसे कि हम लोग स्काई में कोई भी रात में स्टार्स देखते हैं तो हम, ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं हम लोग तो उसमें कुछ पैटर्न बनाना चाहते हैं, उसके अंदर कुछ रिलेशनशिप निकालना चाहते हैं। तो पहले के जमाने में, बहुत पहले जब लोगों ने आसमान को देखा तो उसमें कुछ पैटर्न बनाने लगे, और पैटर्न को फिर मतलब कोई भी स्टार के पैटर्न को वो लोग फिर कॉन्स्टेलेशन का नाम देते हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जहाँ पे हम लोग रहते हैं, अर्थ को दो पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे हम, तो जो नॉर्थ पोल के साइड आता है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, और जो साउथ पोल के साइड में आएगा उसको सदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये जो ये आप यहाँ देख रहे हैं कि ये कॉन्स्टेलेशन है, इसको ओरायन कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। तो ये जो कॉन्स्टेलेशंस के नाम दिए जाते थे, ये मैथोलॉजिकल हीरोज के नाम पे दिए जाते थे या फिर किसी एनिमल के नाम पे दिए जाते थे। तो ये जो आप कॉन्स्टेलेशन देख रहे हैं, ओरायन कॉन्स्टेलेशन, इसमें ये हमें लगता है कि ये सारे किसी एक ही पार्ट के स्टार्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक प्लेन जो हमको दिख रही है यहाँ पे, और ये सारे स्टार्स कितने दूर दूर, ये नीचे स्केल दिया हुआ है 100 लाइट ईयर, 1000 लाइट ईयर्स का। इस स्केल पे आप देख सकते हैं कि ये स्टार कहाँ पे है, ये स्टार कहाँ पे है, ये स्टार कहाँ पे है। तो ये मतलब दूर दूर के स्टार्स है, लेकिन हमको दिख रहे हैं पास पास में। फिर हम बात करेंगे सेलेस्टियल स्फीयर के बारे में। सेलेस्टियल स्फीयर क्या होता है कि जैसे हम अर्थ पे रहते हैं तो अर्थ को सेंटर में मान के जो स्काई हमको दिख रही है उसको हम एक स्फीयर के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, उसको हम लोग सेलेस्टियल स्फीयर का नाम देते हैं। जैसे कि ये अर्थ आप देख रहे हैं, ये बीच में है, और ये जो हमको स्टार्स दिखते हैं स्काई में, इसको पूरे स्फीयर के ऊपर प्रोजेक्ट किया जाता है। और यहाँ पे जैसे कि हम देखते हैं कि सन का पोजीशन रोज चेंज होता रहता है। हम ये जानते हैं कि सन एक जगह पे स्थित है और अर्थ उसके अराउंड रिवॉल्व करता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं कि अर्थ यहाँ सेंटर पे है और सन, इसके हिसाब से क्या होगा कि सन हमको मूव करता हुआ दिखेगा साल भर। और हम ये भी जानते हैं कि अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री पे टिल्ट किया हुआ है, तो उसकी वजह से जो सन का पाथ आता है वो हल्का, ये पाथ जो है ये सन का पाथ है, इसको हम लोग इक्लिप्टिक कहते हैं। अब इस इक्लिप्टिक की वजह से हमारे सीजन्स चेंज होते हैं। जो ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख रहे हैं आप लोग, इसको पहले को हम लोग कहते हैं वर्नल इक्विनॉक्स और दूसरे को कहते हैं ऑटोमिनल इक्विनॉक्स। ये एक डिफरेंट डेट पे ही आता है। ये वर्नल इक्विनॉक्स 21 मार्च के दिन आता है और ये अभी रिसेंटली 21 सितंबर को पास हुआ है। इन दोनों दिन क्या होता है कि मतलब 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। अब यहाँ पे जो इक्लिप्टिक का प्लेन है, अगर इसको हम लोग एक प्लेन में देखें और यहाँ पे सन को मध्य में रखें और यहाँ पे ये अर्थ मूव करता हुआ दिख रहा है हमको, तो ये वर्नियल इक्विनॉक्स की पोजीशन है। यहाँ पे 12 घंटे का दिन, यहाँ पे 12 घंटे की रात। और जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जाते हैं समर की तरफ, तो यहाँ पे क्या होने लगता है कि दिन बड़ा होने लगता है और रात छोटी होने लगती है। फिर जैसे ये 21 सितंबर आया तो आप लोग देख रहे होंगे इस टाइम की दिन छोटा होते जा रहा है और रात लंबी होती जा रही है। और यहाँ पे जो क्या होगा कि रात सबसे ज्यादा लंबी होगी और दिन सबसे ज्यादा छोटा होगा। इसके बाद हम लोग जो इक्लिप्टिक प्लेन की हम लोग बात किए, तो उसमें क्या है कि कई कॉन्स्टेलेशंस हैं स्टार के, वो इक्लिप्टिक पे 12 कॉन्स्टेलेशन, जिसको हम लोग राशि के नाम से भी जानते हैं, ज़ोडिएक कहते हैं उनको। तो ये इक्लिप्टिक के हर 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया इक्लिप्टिक को, और उसके जो कॉन्स्टेलेशंस आ रहे थे स्टार्स के, ये सारे कॉन्स्टेलेशंस आ रहे थे, इनको नाम दे दिया गया। जैसे ये एरीज हो गया, इसको मेष राशि भी कहते हैं। तो ये 12 कॉन्स्टेलेशन है। जैसे कि आपने यहाँ पे मध्य में सूर्य को माना, यहाँ पे पृथ्वी है, तो इसके सामने जो कॉन्स्टेलेशन आ रहा है उसी वही कहेंगे कि सन आज इस कॉन्स्टेलेशन में। जैसे आप लोग खिचड़ी का त्योहार मनाते हैं तो कब होता है वो? जनवरी में होता है, 14 जनवरी को।
तो वो कहते हैं कि सन मकर राशि में प्रवेश कर रहा है, तो वही सन मूव करता रहता है मकर राशि में। अब क्या होता है कि जैसे भी कोई भी स्टार हम देखते हैं रात में, तो कुछ स्टार ब्राइट दिखते हैं, कुछ स्टार डिम दिखते हैं। तो हमें क्या लगता है कि जो ब्राइट दिख रहे हैं वो पास होंगे और जो दूर डिम दिख रहे हैं वो दूर होंगे। तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो एक ब्राइटनेस जो होती है स्टार की, उसको जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अपनी आंख से जो देख रहे हैं, उसको एपरेंट मैग्नीट्यूड का नाम दिया जाता है। तो पहले के एस्ट्रोनॉमर्स हिप्पोक्रेटस के टाइम पे क्या किया उन लोगों ने कि 1 से लेकर 6 मैग्नीट्यूड के बीच में स्टार्स के ब्राइटनेस को डिवाइड कर दिया उन लोगों ने। जो पहला वाला मैग्नीट्यूड था 1 और जो 6th वाला मैग्नीट्यूड था, ये एक दूसरे से 100 गुना ज्यादा ब्राइट थे। तो ये उस टाइम उन लोगों ने किया। फिर हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो स्टार से फ्लक्स, मान लीजिए कोई स्टार से फ्लक्स निकल रही है जो कि एनर्जी है उसकी, और कोई लिमिनोसिटी हम लोग मान ले रहे हैं एल, तो क्या होगा, जो फ्लक्स आ रही है वो सन जो स्टार की लुमिनोसिटी है वो इस रिलेशन से वेरी करेगी 4πr²। और लेकिन अब जो हम लोग को मैग्नीट्यूड दिख रहा है वही उसका मैग्नीट्यूड है। ये इस पे अगर हम लोग स्टडी करें, मतलब इस पे अगर हम लोग काम करें, तो ये गलत होगा एक तरह से। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि एक एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड का नाम दिया गया। एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड का मतलब कि उस स्टार का मैग्नीट्यूड कितना है वो पता होना चाहिए। तो उसके लिए क्या किया गया, एक डेफिनेट डिस्टेंस डी पे स्टार को माना जाता है, और उस वहां पे अगर डिस्टेंस को 10 पार्सेक का नाम दिया जाता है। जैसे हम लोग बहुत डिस्टेंस के बारे में अगर बात करें, तो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस में जैसे किलोमीटर बहुत छोटा हो जाता है। तो अगर हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं, तो अर्थ से लेके सन के डिस्टेंस को हम लोग एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मानेंगे। अगर वो सोलर सिस्टम के बाहर की बात करने लगे तो हम लोग लाइट ईयर्स में आते हैं और पार्सेक में आते हैं। तो जब स्टार को एक डिफिनिट डिस्टेंस 10 पार्सेक पे रखते हैं, वहां पे जो उसकी मैग्नीट्यूड होगी इस स्टार को, उसको एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड कहा जाता है। ये आप जो फिगर देख रहे हैं इसमें हम बताएंगे कि कोई भी स्टार कैसे इवॉल्व होता है, उसकी क्या फेज होते हैं, कैसे वो बॉर्न होता है, कैसे उसकी डेथ होती है। तो कोई भी स्टार बॉर्न होता है स्टेलर नेबुला के अंदर। ये एक नेबुला का फिगर देख रहे हैं आप लोग। नेबुला में क्या होता है कि अगर कोई नेबुला है उसमें धीरे धीरे टाइम के साथ वो नेबुला कंडेंस होने लगता है। जब वो कंडेंस होगा तो उसमें जो डस्ट और गैस होंगी वो फ्रेगमेंट्स में बढ़ जाएंगे। तो अगर कोई भी फ्रेगमेंट अगर स्मॉल मास बना रहा है, ये स्मॉल मास का स्टार्स का पाथ है और ये लार्ज स्टार का पाथ है। तो अगर कोई भी स्मॉल स्टार कहने का मतलब कि जो सन के मास के बराबर हो उनको हम स्मॉल मानते हैं, और उससे 8 सोलर मास से जो ऊपर के हो उनको हम लोग मानते हैं कि वो लार्ज स्टार है। तो पहले क्या होता है कि नेबुला कंडेंस हुआ, एक प्रोटोस्टेलर डिस्क बनाता है वो, और कोर पे प्रेशर बढ़ने लगता है उसके, और फिर एक स्टेज आता है कि एक प्रोटोस्टार बनता है। प्रोटोस्टार में क्या होता है कि अभी इसके अंदर इग्निशन नहीं स्टार्ट हुआ। इग्निशन कहने का मतलब कि इसके अंदर फ्यूजन नहीं स्टार्ट हुआ है हाइड्रोजन का। फिर अगर इसके अंदर हाइड्रोजन का फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है तो फिर ये स्टार दिखने लगता है हम लोगों को, ल्यूमिनस हो जाता है, और उसको फिर हम लोग कहते हैं कि ये स्टार बन गया है। और उसके बाद एक मेन सीक्वेंस का अभी आगे बताएंगे, मेन सीक्वेंस, वो मेन सीक्वेंस पे आ गया। तो ये सब स्टार सबसे ज्यादा अपना लाइफ बिताता है मेन सीक्वेंस के ही ऊपर, और अभी हम लोग का जो सन है वो मेन सीक्वेंस के ऊपर है। और जब इसके कोर में हाइड्रोजन खत्म हो जाता है तो फिर इसका साइज बड़ा हो जाता है कि थोड़ा सा इवॉल्व करता है ये, तो ये बनेगा रेड जाइंट बन जाता है। रेड जाइंट में जब कोर में तो हाइड्रोजन खत्म हो गया, वो सारे हीलियम बन गए, तो हीलियम के ऊपर के जो रहेंगे हाइड्रोजन वो बर्न होने लगते हैं। तो इनके लिए वेलोसिटी थोड़ी इंक्रीज कर जाती है रेड जाइंट की। फिर इसके आगे का फेज है कि जब वो भी खत्म हो जाता है तो उसके बाद ये कोर ही सिर्फ बचता है, और ये एक्सप्लोजन होता है इसके अंदर। ये एक्सप्लोजन होता है तो प्लेनेटरी नेबुला बनता है। ये सेंटर में आप देख रहे हैं जो ये सिर्फ कोर बचा है, और ये बाहर ये स्टार डस्ट और गैस इसके इजेक्ट हो गए।
इसी तरह जब लार्ज स्टार की बात करेंगे तो ये क्योंकि इसका साइज बड़ा था तो ये रेड सुपर जायंट बनेगा और इसका एक्सप्लोजन बहुत ही हार्श होता है, इसको सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। अब इसमें आता है कि जो कोर हमारा है, कोर दो, या तो वो न्यूट्रॉन स्टार बन सकता है या फिर ब्लैक होल बन सकता है। अगर उसका मास थोड़ा कम है, मतलब चंद्रशेखर लिमिट आती है इसमें, तो चंद्रशेखर लिमिट के उसके 1.3 सोलर मास के बराबर अगर कोर का मास इसका, तो ये न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। और अगर ये उससे ज्यादा है तो फिर ये ब्लैक होल बनेगा ये कोर। ये हमारा, इसको एचआर डायग्राम कहते हैं। एचआर डायग्राम मतलब दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बनाया है। इस वाले एक्सेस पे हम ल्यूमिनोसिटी रखे हैं और यूनिट सोलर यूनिट्स है। सोलर यूनिट्स कहने का मतलब कि जो सन की ल्यूमिनोसिटी है उसको हम लोगों ने 1 माना है। और यहाँ पे टेम्परेचर है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि टेम्परेचर इस साइड इंक्रीज कर रहा है। और जो मेन सीक्वेंस में कह रहा था, ये मेन सीक्वेंस की लाइन है ये। और सन हमारा 4.5 बिलियन ईयर से इसी यहाँ पे ही है, मेन सीक्वेंस पे ही है। और आगे 12 बिलियन ईयर्स तक भी यही रहने वाला है। मतलब इसके अंदर अभी हाइड्रोजन बहुत बचा हुआ है और वो बढ़ नहीं है। जब हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो ये रेड जाइंट बनेगा। और रेड जाइंट में जब बनेगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये रेड जाइंट्स बनने के बाद येलो जाइंट में ये जो टाइम है ये इसके हिसाब से बहुत ही कम है। और उसके बाद जब ये रेड फिर प्लैनेटरी नेबुला फेज में आएगा तो वो टाइम भी बहुत कम है। तो सबसे यहाँ पे ये कंक्लूजन निकलता है कि जो स्टार है कोई, वो सबसे ज्यादा टाइम यहीं पे बिताता है मेन सीक्वेंस पे, मतलब हाइड्रोजन बर्न करते हुए। फिर बात आती है कि हम लोग ऑब्जर्वेशंस कैसे लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं, ये एक फिगर देख रहे हैं आप लोग, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं आउटर एटमॉस्फेयर से। तो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम लोग यहाँ अर्थ तक आ नहीं पाती। कुछ विजुअल लाइट आ पाती है, कुछ इंफ्रारेड की लाइट्स आ पाती हैं और रेडियो आ पाती हैं। ये जो हाई एनर्जी वाली है ये सारी यहीं से रिफ्लेक्ट कर जाती है आउटर एटमॉस्फेयर से। और इंफ्रारेड में यहाँ पे एटमॉस्फेयर के अंदर आते ही वो रेडिएशन से एब्जॉर्ब हो जाती है, इसलिए पूरा हम लोग नहीं कर पाते हैं। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आ नहीं पाता है अर्थ के सरफेस तक। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सैटेलाइट्स बनाते हैं और उसको हम लोग आउटर एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारी सैटेलाइट्स हैं जो कि ऑब्जर्वेशंस लेती हैं एटमॉस्फेयर में। ये एक सोफिया है, सोफिया नासा का ही प्रोजेक्ट है। इसमें क्या है कि एक एरोप्लेन है जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में होता है और उसके अंदर एक टेलीस्कोप लगा रखा है इन लोगों ने, और वो इंफ्रारेड में ऑब्जर्व करता है। और ये सारे जो है ये अर्थ के सरफेस पे जो टेलीस्कोप्स लगाए गए हैं, ये सारे टेलीस्कोप्स वो हैं। और इसके ये जो आप लोग देख रहे हैं वेवलेंथ, उनके ऊपर ही जिस रेंज में ये ऑब्जर्व करते हैं ये इसके ऊपर दर्शाया गया है। जैसे इस स्पेजर टेलीस्कोप जो है ये इंफ्रारेड में ऑब्जर्व करता है, हबल हम लोग जानते हैं कि विजिबल लाइट में ऑब्जर्व करता है। ये अब हम लोग थोड़ा जान जाते हैं कि टेलीस्कोप होता क्या है। तो टेलीस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम लोग कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देख सकते हैं, उनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये 3 टेलीस्कोप हम लोग के पास है यहाँ लैब में। ये 70 mm का रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है और ये 3 इंच का रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है। इससे हम लोग प्लैनेट्स को देख सकते हैं, उनके मून्स को देख सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा हम लोग इससे कुछ नहीं कर सकते हैं। और इस वाले टेलीस्कोप से क्या करते हैं कि इसमें एक खास बात यही है कि इसके अंदर स्केल लगा हुआ है, एक एजीमुथ का स्केल लगा हुआ है, एक एल्टीट्यूड का स्केल लगा हुआ है। तो इसकी हेल्प से हम लोग एस्ट्रोफिजिक्स का प्रैक्टिकल कर पाते हैं। ये टेलीस्कोप भी बहुत हाई क्लास टेलीस्कोप है, इसको हम रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ही हाई प्रिसीजन के साथ ये ऑब्जर्वेशन लेता है और इससे हम लोग कोई भी नेबुला भी या फिर कोई एंड्रोमेडा गैलेक्सी को भी देख सकते हैं। ये सोलर इक्लिप्स का एक इवेंट था 2019 में, कोरोना के पहले। तो हम लोगों ने इस टेलीस्कोप को निकाला था देखने के लिए। ये उस टाइम का बैच है और कुछ पुराने बच्चे भी हैं इसमें। टेलीस्कोप बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग में क्या होता है कि एक लॉन्ग ट्यूब होता है और ये लेंसेज की हेल्प से बना होता है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक हम यही कहेंगे कि इसको हम लोग ज्यादा बड़ा नहीं बना सकते। मतलब ऑब्जेक्टिव जो लेंस होता है
उसको ज्यादा बड़ा नहीं बना सकते क्योंकि उसमें एब्रेशन आएगा, ये सारी दिक्कत आएंगी। लेकिन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में हम लोग इसको दूर कर सकते हैं, इसलिए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ज्यादा यूज होता है आजकल। अब ये एक ऑब्जर्वेटरी है, देवस्थल ऑब्जर्वेटरी, जहाँ से हम लोग ऑब्जर्वेशंस लेते हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, 3.6 मीटर का इसका प्राइमरी डायमीटर है। देवस्थल 60 किलोमीटर दूर है नैनीताल के मेन सिटी से, और वहाँ पे लाइट पोल्यूशन बहुत कम है और एटमॉस्फेयर इतना अच्छा रहता है कि यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्वेशंस ले सकते हैं। इसका प्राइमरी मिरर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे 3.6 मीटर का है, फोकल रेशियो f/2 का है। इसमें रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कहने का मतलब कि ये प्राइमरी मिरर से रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पे सेकेंडरी मिरर को, फिर सेकेंडरी मिरर रिफ्लेक्ट कर रहा है सेंसर को। तो इसका जो सेकेंडरी मिरर है वो 0.9 मीटर का है, और इसके 3 पोर्ट हैं। 3 पोर्ट कहने का मतलब कि एक साथ ये यहाँ पे 3 इंस्ट्रूमेंट लगा सकते हैं हम लोग, एक एक्सियल पोर्ट है और 2 साइड पोर्ट्स है। तो एक साथ हम लोग इसके 3 इंस्ट्रूमेंट लगा के ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं इसमें। फिर हम बात करें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की, जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा आजकल। अभी जल्दी इसको दिसंबर नहीं, जल्दी लॉन्च किया गया 25 दिसंबर को। ये अब स्पेस में अब तक का भेजा गया सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, इसका बजट भी बहुत हाई था। इसके जो प्राइमरी मिरर है ये हेक्सागन शेप के हैं, 18 हेक्सागन शेप को मिला के इसका प्राइमरी मिरर बनाया गया है, और जो कि पूरा मिला के 6.5 मीटर का होता है। अब आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा होगा। ये इसके यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये प्राइमरी मिरर है और ये इसका सेकेंडरी मिरर है, और यहाँ पे ये यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट करता है, और यहाँ पे इसके सारे सेंसर लगे हुए हैं। अब ये जो स्पेस टेलीस्कोप है इसको L2 पॉइंट पे भेजा गया है। L2 पॉइंट क्या है? लैग्रेंजियन पॉइंट 2 है। ये आप देख रहे हैं, ये सन है और ये अर्थ है। जब कोई भी मैसिव ऑब्जेक्ट होते हैं दो, तो उसके 4 लैग्रेंजियन पॉइंट होते हैं। तो ये L1 पॉइंट है और ये L2 पॉइंट है, ये 5 होते हैं। ये L3 पॉइंट है, ये L4 और ये L5 है। तो अगर हमको सोलर एस्ट्रोनॉमी करनी है, मतलब सिर्फ सन को स्टडी करना है, तो सबसे अच्छा मतलब यहाँ पे तो हम लोग भेज ही नहीं सकते, ये सब इतने दूर है कि यहाँ पे हम लोग कुछ भेज ही नहीं सकते। तो अगर हमको सन के बारे में स्टडी करना है तो सबसे अच्छा पोजीशन ये L1 है। तो इसरो अभी प्लान कर रहा है L1 पॉइंट पे भेजने के लिए। आदित्य मिशन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो यहाँ पे L1 पॉइंट पे वो भेजा जाएगा। और हम लोगों को अगर एस्ट्रोनॉमी करनी है तो हम लोग को चाहिए कि सन दिखे ना। सन नहीं दिखेगा तो उससे क्या होगा कि डार्क स्काई दिखेगी। तो उसके लिए सबसे बेटर पोजीशन है ये L2। L2 क्या करेगा? इसके शेडो में रहेगा, अर्थ के शेडो में रहेगा। अब ये जेम्स वेब टेलीस्कोप में 4 इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। निरकैम लगा हुआ है, निरस्पेक लगा हुआ है, नीरी लगा हुआ है, और ये FGS न्यूरस लगा हुआ है। निरकैम क्या है? नियर इंफ्रारेड कैमरा। ये ऑब्जर्व करता है, ये इमेज लेता है 0.6 माइक्रोमीटर से लेके 5 माइक्रोमीटर तक, और ये इंस्ट्रूमेंट उसी का 0.6 माइक्रोमीटर से लेके 5 माइक्रोमीटर रेंज तक स्पेक्ट्रा लेता है। और ये जो मीरी है ये 5 माइक्रोमीटर से लेके 28 माइक्रोमीटर तक का लेता है। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये गोल्ड प्लेटेड कलर में क्यों है? क्योंकि ये टेलीस्कोप इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशंस लेता है। तो इंफ्रारेड जो रेज होती है सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टिविटी उनकी इसी गोल्ड से होती है, इसलिए 99.9% आप कह सकते हैं कि रिफ्लेक्टिविटी है इसकी, इसलिए इसको गोल्ड प्लेटेड किया गया है। अब ये 2 इमेज आप देख रहे हैं, ये कैरेला नेबुला की इमेज है। पहला वाला इमेज जो लिया गया है ये लिया गया है हबल स्पेस टेलीस्कोप से, और दूसरा वाला जो इमेज लिया गया है ये JWST से लिया गया है। अब इसमें आप अंतर साफ साफ देख पा रहे होंगे, ये विजिबल लाइट में ली गई हुई तस्वीर है और ये इंफ्रारेड में ली गई हुई तस्वीर है। इसमें आपको ये छोटे छोटे स्टार्स नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन इंफ्रारेड इमेज में ये सारे स्टार्स दिख रहे हैं। फिर हम बात करेंगे इसकी दूसरी इमेज की। इसके बारे में भी आप लोगों ने जब ये लॉन्च हुआ था तो बहुत देखा होगा। ये इमेज है SMAC 0727 की। ये स्टार ऑफ क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज है। इसमें आप डार्क मैटर को साफ साफ देख पा रहे हैं, क्योंकि पहले हम क्या जानते थे कि लाइट जो है कि एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लेकिन फिर आइंस्टीन ने उस पर बहुत काम किया। उन्होंने बताया कि लाइट को बेंड भी किया जा सकता है। तो फिर एडिंगटन ने उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी दिया था। एक बार सोलर इक्लिप्स हुई थी
तो उसके उन्होंने उस टाइम ऑब्जर्वेशंस लिया था, फिर उसमें पता चला कि जो लाइट है उसको बेंड भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो लाइट गैलेक्सी से आ रही है, यहाँ पे इतना डार्क मैटर है, मास इतना ज्यादा हाई है यहाँ पे कि ये यहाँ पे ग्रेविटेशनल लेंसिंग हो रही है। ये जो लाइट दिख रहा है आपको, ये बेंड करता हुआ दिख रहा है ना, ये लाइट बेंड हो रही है यहाँ पे। अब ये इमेज इंफ्रारेड मिली गई है, तो आपको लग रहा होगा कि ये ऐसा दिखता है, लेकिन ये ऐसा दिखता नहीं है। ये इमेज को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स पे इमेज लेते हैं हम लोग, और डिफरेंट, जैसे ब्लू लाइट को ब्लू कलर को ये वेवलेंथ दे दिया गया, ग्रीन को ये दे दिया गया, रेड को ये वेवलेंथ दे दिया गया, तो प्रोसेस करके ये इमेज बनाई गई है। फिर ये जुपिटर का एक इमेज लिया था जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में, जो कि बहुत ही ज्यादा अब तक का सबसे अच्छा इमेज कह पाएंगे हम लोग जुपिटर का जो लिया गया है। यहाँ पे आप जुपिटर के रिंग्स भी देख सकते हैं, और ये सदर्न अरोरा है और ये नॉर्दर्न अरोरा है। अरोरा क्या होता है कि जैसे सन जब एक्टिव फेज में होता है, एक्टिव फेज में कहने का मतलब कि वहां से सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं, और वो फ्लेयर्स से चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं सन से। तो वो चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं कि अर्थ पे भी आते हैं और जुपिटर पे भी जाते हैं, लेकिन अर्थ और जुपिटर के पास मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो क्या करती है, वो चार्ज पार्टिकल को रिपेल करके इधर ले आती है पोल पे, और वो यहाँ से इंटर करते हैं। तो क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है, तो जब एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं तो ये ग्लो करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सदर्न अरोरा भी दिख रहा है और ये नॉर्दर्न अरोरा भी दिख रहा है यहाँ पे। फिर ये हमारी लैब का एक फ्लो चार्ट आप कह सकते हैं। ये प्रोफेसर शांतनु का लैब है, जिसमें हम लोग वर्क करते हैं एटमॉस्फेरिक फिजिक्स में और एस्ट्रोफिजिक्स में। एटमॉस्फेरिक फिजिक्स में डॉक्टर प्रभुनाथ प्रसाद सर है, ये उनका काम रिमोट सेंसिंग पे है, जो कि प्लानिटरी साइंस कह सकते हैं, इस पे काम करते हैं। और प्रयागराज सिंह और बख्तावर ये काम करते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में एरोसोल पे काम करते हैं, ये लोग ब्लैक कार्बन पे काम करते हैं। फिर एस्ट्रोफिजिक्स में भी हम लोग दो पार्ट में काम करते हैं, एक थ्योरेटिकल एस्ट्रोफिजिक्स में और ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोफिजिक्स में। थ्योरेटिकल एस्ट्रोफिजिक्स में क्या करते हैं, जैसे हम लोग का काम एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स पे, तो एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स को हम लोग मॉडल करते हैं, उनका देखते हैं कि वो मॉलिक्यूल्स कैसा स्पेक्ट्रा देंगे। तो ये सारे काम थ्योरेटिकल एस्ट्रोफिजिक्स में होते हैं। फिर ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोफिजिक्स में हम लोग ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, जो कि अभी बेसल का टेलीस्कोप दिखाया गया है, उससे ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, और जो थ्योरेटिकल डेटा हमको मिला है उसको मैच करने की कोशिश करते हैं। ये दो क्वेश्चन मार्क्स देख रहे होंगे आप लोग, ये इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि हम लोग दो स्टूडेंट अभी और देख रहे हैं इस पे काम करने के लिए। तो आप लोगों को अगर इंटरेस्टिंग लगेगा तो आगे आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। Thank you, Atul, for delivering your fruitful thought on the basis of astronomy. Am I audible? People in the Zoom can raise their questions by unmuting themselves. Hello. आवाज क्लियर नहीं है हमारी। Atul, I'm thanking you for delivering your fruitful thought on basics of astronomy. थैंक यू। Now, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। क्या चीज? क्योंकि हमको स्टार्स की इमेज लेनी है ना, तो अगर हम सन को ही देखेंगे तो बाकी बैकग्राउंड के तो स्टार्स दिखेंगे नहीं हमको, लेकिन अगर हम शेडो में रखते हैं उसको तो बैकग्राउंड के स्टार्स दिखेंगे ना उसमें। इसलिए उसको L2 पॉइंट पे रखा गया है कि हम हर टाइम एस्ट्रोनॉमी कर सकते। हाँ, अगर हमको सन के बारे में स्टडी करना है तो उसको L1 पे रखेंगे, क्योंकि हर टाइम हम सन को फेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसलिए उसको L1 पे रखा है, उसको L2 पे रखा है। So, thank you, Atul, for wonderful lecture, and I hope you are, developing your interest in the field of biology.